Students, today it will be our first online video lecture. Yesterday we had decided to start with the first topic. Dear students, we had selected yesterday, that is physiology. Before discussing the first topic of this plant physiology, I mean diffusion, dear students, first of all we will discuss what do you mean by plant physiology. My dear students, every organism, starting from the bacterial world up to the plant and animal including human beings, every individual, every organism performs certain basic vital processes so that the organism can survive within the biological world. Suppose there is a bacterial cell, it takes the nutrients from this environment, later on the nutrient is broken down, later on it is oxidized and energy will be released. This is the fundamental process. This is the vital process. Similarly, a bacterial cell, it can take this oxygen from this environment, it will be utilized for the respiration, oxidation of this food. It is a vital process. Study of all the vital processes by which an organism can survive is actually a branch of biology called as physiology. But we are dealing with the botanical world, we are dealing with this plant sciences, we have to initiate with actually plant physiology. If we can define this plant physiology, it is branch of botany, it is branch of plant sciences there, which deals with study of fundamental processes taking place within the plants. But understand कर लो, ये fundamental processes क्या होते हैं, plant physiology खुद ब खुद समझ आ जाएगी. But fundamental processes होते हैं vital processes, जिससे एक organism survive होता है. आपने lower classes में पढ़ा है, एक organism को, एक human को nutrition चाहिए, respiration चाहिए, ingestion चाहिए, excretion चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, तो बेटा वाइटल प्रोसेसेस होते हैं ना, ये फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं. इसलिए बॉटनिकल वर्ल्ड में जो फंडामेंटल प्रोसेसेस आते हैं, वाइटल प्रोसेसेस आते हैं, बेसिक प्रोसेसेस आते हैं, इनकी स्टडी को हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं. सो दैट मीन्स दोज वाइटल प्रोसेसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस प्लांट. एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सर एक प्लांट में कौन सी प्रोसेसेस वाइटल है, फिर आपने पढ़ लिया होगा लोअर क्लासेस में. देयर इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. दिस physiological process, you know, that's called as photosynthesis. Synthesis means to put together, photon means to light, where radiant energy is converted into the chemical energy. But this is a basic process, fundamental process, not only for the plant world, but for the animal world as well. Remember, this photosynthesis will be discussed under plant physiology. Similarly, there is a plant, there is an animal, it takes the oxygen from this environment. This oxygen reaches within the cells, and within the cells, respiration, I mean cellular respiration occurs. This is a vital process. This is fundamental process. That means respiration will also be discussed under plant physiology. Another process you have to remember, that is mineral nutrition, one of the important topics for the NEET students, where they have to remember the role played by essential elements, role played by the nutrients for the plant systems, macro as well as micronutrients. इनकी स्टडी को हम, ये प्लांट कैसे लेता है, अंदर किस प्रोसेस से आते हैं, कहां से यूटिलाइज होते हैं, किस बायो मॉलिक्यूल में मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, इनके पढ़ने को हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिशन. Besides, there is another process, that is ascent of sap. We all know that plant is fixed within the soil and water is present within the soil.
ये वाटर का आना, इस प्लांट के अंदर एंटर होना, इसके लिए जाइलम इन्वॉल्व होना, ये सर्कुलेट होना विद इन द प्लांट बॉडीज, दैट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज ascent of sand. Similarly, there is another process that is translocation. I mean, this is called as translocation of sugars or translocation of organic solutes or translocation of carbohydrates. So, what is translocation? Time and again, I always tell my students, बेटा याद रख लीजिएगा, lead is source, जहां फूड बनता है, जहां फोटोसिंथेसिस होती है, और रूट इज सिंक, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है. जिस तरीके से हमारी फैमिलीज में पेरेंट्स वो कमाते हैं, सोर्स होते हैं, वी आर डिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट, यू आर सिंक. ओके, सो सोर्स से मटेरियल जाता है सिंक तक. बेटा इसमें फ्लोएम इन्वॉल्व होगा. आगे लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे मूवमेंट ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक विल बी ट्रांसलोकेशन, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस. बिसाइड्स दैट, एक प्लांट के पास ट्रांसपायरेशन है, एक प्लांट के पास गटेशन है, बहुत सारे प्रोसेसेस जिससे एक प्लांट सर्वाइव होता है. जो बेसिक प्रोसेस होते हैं, याद रख लीजिएगा, स्टडी ऑफ दोस बेसिक प्रोसेस एक्चुअली कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी. सो पहला पॉइंट आज आपने याद रखा है. सो प्लांट फिजियोलॉजी का वो ब्रांच है बॉटनी की जिसमें हम फंडामेंटल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हैं. और प्लांट्स में बहुत सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं. खासकर आपने याद रखना है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, एसेंट ऑफ सैप है, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपायरेशन है. और एक पॉइंट आपने याद रखना है, फिर इसके बाद हम टॉपिक उठाएंगे. रिमेंबर, Stephen Hills is regarded as father of plant physiology. You can pen down this fact as a Stephen Hills is father of plant physiology. So this is introduction about plant physiology. What does physiology mean? Rather, what does plant physiology mean? Beta, I hope you have understood the basic term, that is, what do you mean by plant physiology? After that, we'll begin with the first topic of this plant physiology. That's fundamental topic. That is important to understand the movement of the gases between the cells within the plants, transpiration. Important topic हम उठाने जा रहे हैं. That is actually diffusion. Etymologically, diffusion is derived from the Latin word diffundere, which means to spread out, as the term suggests. Spread out. That means something related with kinetic energy will be there. I guess, I predict there could be the concept of the kinetic energy. Yes. Sir, what do you mean by diffusion? मैं आपको बताऊंगा. Diffusion से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा. Later on it will be utilized. Suppose मेरे हाथ में डिओड्रेंट होगा. There will be another person besides me. मेरे बगल में कोई दूसरा बंदा होगा. He will be allergic to this deodorant. What I have done, मेरी जेब में से deodorant निकाला, I spray it. लेकिन after some time, the person said, "Why you have used of this deodorant?" Deodorant मैंने इस्तेमाल किया, but he claimed that you have used of this deodorant. Fact is that there was the movement of these deodorant particles. Sir, from where? Where I had used higher concentration. To there, where the concentration was 0 or less. So that means particles का movement होगा, ये spread होगा. यही spread हम आज बताने जा रहे हैं. That is diffusion. First of all, I will write a definition. You will understand what do you mean by diffusion. It is movement of substance. The substance can be solid, liquid, or gaseous particles, but it is prominent in the gaseous particles, as we know. It is movement of substance. Any particle which has property to move randomly, that is diffusing particle. I will say it is movement of substance. It is movement of diffusing particles. Solid, liquid, gas, ion, non-ionic substances. From, this is important point, its higher concentration,
Sir, what do you mean by concentration? Concentration means quantity. Concentration means number of particles. From higher concentration to lower concentration, where quantity will be less. Where quantity, number of particles will be less due to random translational energy. I will write due to random kinetic energy. बेटा understand कर लीजिएगा. एक पॉइंट आपने याद रखा है. It is movement of substance. That means something is related with kinetic energy. किसका मूवमेंट होना? सबस्टेंस का. कहां से लेके? बेटा जहां इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी वहां से कहां ये गया है? जहां इसकी कंसंट्रेशन बेटा कम थी. किसकी वजह से? ड्यू टू रैंडम काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी. सर इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज डिफ्यूजन. मैं आपको दिखाऊंगा. सपोज दीज आर डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन. यहां इसकी कंसंट्रेशन कम है. ये एक्स है, ये वाई है, ये एक साइड है, ये दूसरी है. इस मॉलिक्यूल की एक नेचुरल टेंडेंसी है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है. मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल एट दिस साइड टुवर्ड्स दैट साइड, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज डिफ्यूजन. ओके, और एक पॉइंट आपको मुझे बताना है रिगार्डिंग दिस डिफ्यूजन. सर, is diffusion uphill process? Never ever. So then it is downhill process. Remember, diffusion is actually downhill. That means the movement of substance is from higher concentration to lower concentration. अगर ये lower से higher होगा, वो आगे टॉपिक्स आएंगे. That will be uphill. That will be active. That will be non-spontaneous later on, and remember that will need the energy. लेकिन ये डाउनहिल प्रोसेस है. यहां मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है. और एक पॉइंट आपने बेटा याद रखना है. सर, इज दिस डिफ्यूजन एनर्जेटिकली स्पीकिंग एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस? बेटा मैं आपको बताऊंगा. थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज है. जिन प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, वी कॉल देम एज स्पॉन्टेनियस. बट दोज विच ऑपरेट बट दे नीड एनर्जी, दोज आर नॉन स्पॉन्टेनियस. डिफ्यूजन में किसी भी तरह की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है. अगर सेल्स में, ऑर्गेनिज्म में, हम में डिफ्यूजन होगा, प्लांट्स में डिफ्यूजन होगा. नो कंसेप्ट ऑफ एटीपी. कैन यू क्लेम दैट डिफ्यूजन इज नेवर एक्टिव, रादर डिफ्यूजन इज पैसिव प्रोसेस. प्लस साइमल्टेनियसली ये खुद ब खुद होता है. वी हैव टू से इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो पहला पॉइंट आज आपने याद रखा है, डिफ्यूजन में सबस्टेंस मूव होते हैं हायर से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. दैट मींस इट इज डाउनहिल प्रोसेस. और एक पॉइंट आपने बेटा याद रखा है दैट इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एटीपी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी. नो एनर्जी, नो एटीपी. सर वही है यूज द वर्ड एटीपी बिकॉज जब ये सेल्स में होगा तो सेल्स की जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है. अब इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ एटीपी एनर्जी, इट इज पैसिव. दैट मींस थर्मोडायनेमिकली स्पीकिंग इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके टेक्स्ट पे भी दिया गया होगा, you can check that. अगर ये प्लांट है, you can raise a question. सर, इस प्लांट में अभी आपने बताया that was source. I mean this is leaf, this is source. And this is root, this is sink, this is dependent organ, this is independent organ. ये बनाने वाला है और ये इस्तेमाल करने वाला है. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 1 मीटर से ज्यादा है. दैट मींस इट इज लॉन्ग डिस्टेंस. एक बड़ा सा प्लांट है. एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन कर सकता है, सर अगर शुगर्स की कंसंट्रेशन सोर्स में ज्यादा है तो सिंक इस्तेमाल करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम है. बट मैं एरो दिखाऊंगा, जब मैं एरो लोअर दिखाऊंगा इट विल बी कंसंट्रेशन लो. एरो अप होगी तो कंसंट्रेशन ज्यादा है. इस वक्त मुझे बताइएगा कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है? सोर्स में. अच्छा शाबाश. कंसंट्रेशन कम कहां पे है? सिंक ऑर्गन में. वेरी गुड. सो इसके बाद आपने याद रखना है
सोर्स से लेके सिंक तक खुद ब खुद शुगर्स आ सकते हैं। किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। लेकिन ये रॉन्ग है। सर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहां ज्यादा है। व्हाट आई हैव टू से, कहने का मतलब ये है कि जब भी डिफ्यूजन ऑर्गेनिजम्स में होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कभी काम नहीं करता है। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। Diffusion is never operating at the long distances. Time and again I stress on this point. Diffusion is never working on this long distances. Rather, diffusion is short distance transport process. I mean, it is operated at the cellular level. It is short distance transport process here. जब भी मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, लेकिन सेल टू सेल मूवमेंट होता है, हायर से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक, डिफ्यूजन विल बी इन्वॉल्व। लेकिन यहां भी कंसेप्ट था हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन कैन नेवर अकर हियर। इसलिए बायोलॉजिस्ट्स ने एक न्यूमेरिकल फार्मूला से प्रूव किया है कि अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेटा लेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यही तो नॉर्मली मोनोसैकेराइड है, यही सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ओके, अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेटा लेंगे, aldohexose it is also called as, because it contains the aldehyde with 6 carbon, hence called as hexose। अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सेल में लेंगे, और सेल की जो लेंथ है, आई मीन फॉर एग्जांपल डायमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स दिस पॉइंट, कितना टाइम लगेगा? इफ वी अप्लाई द रूल, अगर यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन विल बी इन्वॉल्वड। It has been observed biologically that it will take only 2.5 seconds। बहुत कम टाइम में एक पार्ट से लेके, सेल के एक साइड से लेके सेल के दूसरे साइड तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ सकता है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इंक्रीज करेंगे, अब 1 मीटर, ज्यादा नहीं है, ये सोर्स है, ये सिंक है, अब डिस्टेंस 1 मीटर है। अब हम बताएंगे कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन कम, विल डिफ्यूजन विल बी इन्वॉल्वड? नो, डिफ्यूजन इज नेवर ऑपरेटिंग एट द लॉन्गर डिस्टेंसेस। फिर भी मैं आपके लिए बताऊंगा सर कितना टाइम लग सकता है। व्हाई डिफ्यूजन इज नॉट इन्वॉल्वड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस? बिकॉज टाइम जो लगता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वो बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम छोड़ देंगे 1 मीटर डिस्टेंस की तरफ, रिमेंबर इट विल नीड अप्रोक्सीमेटली 32 years to reach from source towards sink if distance will be 1 meter। Now it is time to decide। ये आप पे है, आप खुद डिसाइड कीजिए। Would a plant wait to send the molecule where distance is 1 meter? Would a plant utilize the diffusion? It has to wait for the 32 years। Hence, we have to say that diffusion is never operating for the long distances. Diffusion is operating for the short distances। So hence, this was the first important introduction about this topic here, that is actually called as diffusion। और आपने याद रखा है, diffusion वो एक प्रोसेस होता है जहां पार्टिकल्स मूव होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, खुद ब खुद रैंडम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। दूसरी बात है, ये डाउनहिल प्रोसेस होता है। और एक पॉइंट आपने याद रखा है यहाँ पे, इसमें कोई भी एटीपी का सोर्स नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती है, ये एनर्जेटिकली पैसिव प्रोसेस होता है। दैट मीन्स टुमारो यू कैन क्लेम कि अगर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन होता है, अगर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से लेकर दूसरी सेल की तरफ ऑक्सीजन जा रहा है, remember no ATP will be utilized here and it is spontaneous thermodynamic language। और एक पॉइंट आपने याद रखा है, डिफ्यूजन इज ओनली ऑपरेटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। एक सेल दूसरी सेल, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन कम, डिफ्यूजन विल बी यूटिलाइज्ड। एक सेल दूसरी सेल, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ज्यादा ग्लूकोज कम, दैट मींस डिफ्यूजन विल बी इन्वॉल्वड हियर, हायर टू लोअर। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा आएगी तो डिफ्यूजन इसके लिए यूटिलाइज नहीं होता है। आपने पॉइंट एक याद रखा है, ग्लूकोज को क्रॉस करने के लिए 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए इट विल नीड ओनली 2.5 seconds, 2.5 seconds। And same glucose molecule, if distance will be increased up to 1 meter here, that means you can imagine the time, it will be approximately 32 years। Okay, so this was the concept, that was diffusion। I hope you have understood this topic। Thank you।